નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રેણી 5 આજે આપણે એક એવો પાઠ શીખીશું કે આપણે દિવસની શરૂઆત કરીએ ત્યારથી આપણે કયા કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, શરૂઆત ક્યાંથી કરીએ છીએ એ આપણે જોઈએ. કે આપણે સવારે જ્યારે ઉઠીએ છીએ ત્યારે સીધા કોઈ કામ કરવા નથી બેસી જતા, આપણી શરીરની સફાઈ કરીએ છીએ. પહેલાં દાંત સાફ કરો, મોઢું સાફ કરો, આંખ સાફ કરીએ અને ત્યાર પછી આપણે દૈનિક પ્રવૃત્તિ, આપણી શારીરિક સફાઈ થયા પછી આપણે બીજા અનેક પ્રકારના કામ કરીએ છીએ. જો આપણે પહેલાં ઉઠીને બ્રશ કરીએ, આંખ સાફ કરીએ, મોઢું સાફ કરીએ, શરીર સાફ કરીએ, તો એ બધું સૌપ્રથમ આપણે કરીએ છીએ. જો આપણે એ નહીં કરીએ તો શું થાય? પહેલેથી આપણે એ કામ કરીએ જ છીએ કે ચાલો બ્રશ કરીને આપણે નવા જવાનું, તેઓ શરીરની સફાઈ થઈ, કપડાં સ્વચ્છ રાખીએ, ઘર સાફ રાખીએ, શાળાએ જઈએ તો આપણે શાળાની વસ્તુ, આપણા પાઠ્યપુસ્તક, એ દરેક પ્રકારની સ્વચ્છતા આપણે કરીએ છીએ. જો એ ન કરીએ તો આપણને કયા કયા પ્રોબ્લેમ થાય છે એ આપણે પહેલાં અને બીજા ધોરણથી જ આપણે સ્વચ્છતા વિશે આપણને શીખવવામાં આવે છે અને ઘરમાં પણ આપણે એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખીએ છીએ. તો એવો જ એક પાઠ આજે આપણે કક્ષા 5 હિન્દીમાં સ્વચ્છતા વિશે શીખીશું. સ્વચ્છતા और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है. સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્ય માટે આ ઘનિષ્ઠ સંબંધ, ઘનિષ્ઠ એટલે ગાઢ સંબંધ. સ્વચ્છતા હોય ત્યાં પ્રભુતા હોય છે એવું કહેવામાં આવે છે, એવી કહેવત પણ છે. જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. સ્વચ્છતા और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है. એનો ગાઢ સંબંધ છે. સ્વચ્છતાની સાથે આપણા સ્વાસ્થ્યની વાત પણ જોડાયેલી છે. સ્વચ્છતા કે અભાવ મેં ગંદકી ફેલતી હૈ. જો જ્યાં સ્વચ્છતાનો અભાવ હોય તો ત્યાં ગંદકી ફેલાયેલી હોય છે. ગંદકી રોગોं की जड़ है. रोगों की जड़ होना यानी મૂળ કારણ હોના. જ્યાં ગંદકી હોય ત્યાં અનેક પ્રકારના રોગ फैलाए છે. यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं. જો આપણે સ્વચ્છતા રાખીએ ને તો એક સુંદર જગતનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ. સાથ ही સ્વસ્થ भी रह सकते हैं અને એની સાથે આપણું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે છે. एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया. એવો જ એક આ પાઠ છે. બે મિત્ર છે અને એમની બર્થડે માટે એક મિત્ર બીજા મિત્રને બોલાવે છે અને ત્યાં એને કેવા કેવા સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્ય માટે કેવા અનુભવ થાય છે એ પાઠ આપણે જોઈએ. એક દિન અજય ને મોહન को अपने जन्मदिन पर बुलाया. અજય મોહનને એક દિવસ જન્મદિવસ માટે બર્થડે પર બોલાવે છે. मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी. મોહને એને ઉપહાર યાને ભેટ આપવા માટે એક કહાની, વાર્તાની ચોપડી એને આપે છે. ઉસે રંગીન કાગજ में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा. એને રંગીન કાગળની અંદર પેક કરે છે અને પછી અજયના ઘરે જવા માટે તૈયાર થાય છે. જૈસે ही अजय की गली में पहुंचा. જેવો એ અજયની ગલીમાં પ્રવેશે છે, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा. देखो ये चित्र हम देख सकते हैं, है ना? तो क्या लिखा है उसमें? ना समझ लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं और यह कचरा कूड़ेदान में डाले. अच्छे लड़के कूड़ा कूड़ेदान में ही डालते हैं. उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा. એના ઉપરથી કેળાનું છોટલું એના ઉપર પડે છે. છી કેટલી બુરી આદત છે. એને મનમાં એવું થયું કે કેટલી ગંદી આદત કહેવાય છે. સમજદાર લડકા
ना समझ लड़का। समझदार लड़का कचरा कूड़े डाल में ही डालते हैं, ना समझ लड़का कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। मोहन ने मन में सोचा, मोहन मन में विचारे छे। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। एणे केळाનું છોટલું ઉચકી લીધું, આમ તેમ જુએ છે કે ક્યાંક એમને કચરાપેટી દેખાય। જો કચરાપેટી દેખાય તો એની અંદર કચરો નાખવો જોઈએ, એમ વિચારીને આમ તેમ જુએ। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। थोड़े दूर एमने एक कचरापेटी जोवा मळी। उसने छिलका उसमें डाला। एणे जईने एक कचरो कचरापेटीनी अंदर नाखी दीधो। बहुत सा कूड़ादान के बाहर फैला हुआ था। घणो बधो कचरो कचरापेटीनी आसपास फैलायेलो हतो। वहाँ मक्खियाँ भीनक रही थी अने कचरानी पाछळ आसपास माखी उड़ी रही हती। जो आपणे आ कचरानो योग्य निकाल न करीए तो माखी अनेक प्रकारना रोग फैलावे छे। और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कचराने लीधे माखीओ एना उपर बैठी हती अने ए गंदगी फैलायेली हती। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई अने त्यांथी थोड़े आगर जाए छे तो एने बदबू आई। बदबू आने गंदी वास, बदबू गंदी स्मेल आवे छे। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। एणे जोयुं के नाली एटले के पाणी, गंदू पाणी के गंदा पाणीना निकाल माटेनी जे नाળી बनावेली होय, गटर बनावेली होय, एनी अंदर कचरो फसायेलो हतो अने कचरा फसावाने कारणे एमांथी गंदू पाणी निकळतुं हतुं नहीं अने एना लीधे खूब गंदगी फैलायेली हती। इसी पानी से बदबू आ रही है अने आ गंदू पाणी पेलुं पाणी अटकी जवाने लीधे गंदी स्मेल आवती हती अने गंदगी फैलायेली हती, माखी फैलायेली हती अने माखी फैलाय तो माखी उड़ीने एक ज जग्याए रहती नथी अने ए उड़ीने आपणा घरमां पण आवे, खावानी वस्तु पर पण बेसे अने जो खावानी वस्तु पर बेसे अने ए आपणे खोराकमां उपयोग करीए ए खोराकनो तो एमांथी आपणने रोग थाय। एटले मूળ कारण गंदगी अनेक रोगोनुं कारण छे। तो गंदगी आपणे दूर करीए तो ज आपणुं स्वास्थ्य पण सारूं रहे। मोहन नाक पर रूमाल रखे अजय के घर। मोहन नाक पर रूमाल दबावीने, कारण के खूब गंदी वास आवती हती એટલે नाक पर रूमाल दबावी दे छे अने अजयना घरे पहुँचे छे। वहाँ अजय के और कई मित्र आए थे अने त्यां अजयना कई केटलाय मित्रों आवेला हता। अजय मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय ने मोहननी माँ अने एना पिताजी ने पण मळी आवे छे। अजय की दादी जो बीमार थी अने अजयनी दादी माँ जे बीमार हता। मोहन उनसे भी मिला। मोहन एने पण मळवा जाय छे। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी अने टेबल पर खावानी चीज़ों मूकेली हती जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी, जेना उपर वारंवार माखीओ आवती हती। जोयुं गंदगी केवुं मूळ कारण छे, रोगनुं कारण छे। गंदगीथी रोग फैलाय छे एटले आपणे स्वच्छता खूब जरूरी छे। उठीने जेवुं शरीर साफ करीए छे तेवुं गाम, शेरी, शहर, रास्ता, अपना मोहल्ला सब कुछ स्वच्छ रखना चाहिए। तुम्हारे मोहल्ले में खाने की चीज़ें रखी थी, उन पर बार बार मक्खी आ जाती थी। खावानी चीज खुली पड़ी हती अने एना पर पण वारंवार माखीओ आवती हती। मोहन ने अजय से कहा। मोहने अजय ने कह्युं, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? तारा मोहल्ला में आटली बधी गंदगी केम छे? क्या नगरपालिका उसे साफ नहीं करती? नगरपालिका आवीने एने स्वच्छ साफ नहीं करी सकती? अजय की माता ने कहा। अजयनी माता एमने कहे छे, बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। नगरपालिका की गाड़ी तो आवे ज छे। जगह जगह कूड़ेदान भी है अने थोड़े थोड़े अंतरे कचरापेटी पण मूकवामां आवी छे। वे पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, पण केटलाय लोको एवा छे
જે કચરો कचरा पेटी में नाखता नहीं। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं। ना समझ लोग कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते और इधर उधर ही फेंक देते हैं। कचरा पेटी है छતાં પણ કચરો બહાર ફેંકી દેવામાં આવે છે, इसलिए सफाई नहीं रहती અને એટલા માટે અમારા મોહલ્લામાં सफाई रहती नहीं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। बीजे दिवसे मोहने आ बात अजयना घरे गयो ने जे अनुभव थयो ए बात कोने बतावे छे? एमना शिक्षकने कहे छे કે ગઈકાલે આ રીતે હું જન્મદિવસ પર ગયેલો અને ત્યાં આ રીતે ગંદકી જોવા મળી। આ વાત શિક્ષકને કહે મોહન અજયની શિક્ષકને કહે છે। અધ્યાપકને કહા અધ્યાપકે એમને કહ્યું तुम ठीक कहते हो मोहन। तो साचું કહે છે મોહન। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी બધા જ રોગનું મૂળ કારણ છે। ગંદકી દ્વારા જ મોટે ભાગના રોગ ફેલાય છે। नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। नगरपालिकाનું કામ શું છે કે નગરને स्वच्छ રાખવું, पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए। नगरपालिकाની ફરજ જો છે નગરને સ્વચ્છ રાખવું, પણ આપણી પણ ફરજ બને છે કે આપણે પણ એની સહાયતા, આપણે એને મદદ કરવી જોઈએ। નગરપાલિકા જો આપણને આવીને અનેક જગ્યાએ કચરા પેટી મૂકી છે, એમાં કચરો નાખવાનો, કચરો એ ઉપાડે છે, સ્વચ્છ કરી આપે છે, તો આપણી પણ એ ફરજ તો બને છે ને કે આપણે કચરો કચરા પેટીમાં નાખવાનું, એનું ઢાંકણ બરાબર બંધ કરીએ તો ગંદકી ફેલાતી નથી, તો ઘણા બધા રોગ થતા એમાંથી અટકી જાય છે। ચલો, એક દિન सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का प्रारंभ करें। જ્યારે મોહન અધ્યાપકને શિક્ષકને આ વાત કરે છે, શિક્ષક એની વાત શાંતિથી સાંભળે છે અને પછી નક્કી કરે છે કે આપણે હવે એમના નગરપાલિકાને આપણે મદદ કરવી જોઈએ। તો એમની મોહલ્લામાં જાય છે અને અજય કે મોહલ્લે में चले और स्वयं सफाई का प्रारंभ करें। એમણે નક્કી કર્યું કે અજયના મોહલ્લામાં આપણે જવાનું છે અને ત્યાં આપણે સ્વચ્છતા કરવાની, સફાઈ કરવાની છે। रविवार के दिन अजय के मोहल्ले में गए सभी। रविवार के दिन सभी એમના ક્લાસના જે છોકરાઓ હતા, અધ્યાપક હતા, મોહન હતો, અજય હતા, એ બધા ક્યાં જાય છે? અજયના મોહલ્લામાં, એની શેરીમાં, એની સોસાયટીમાં જાય છે અને स्वच्छता आरंभ करे छे। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थी। बधानी पासे एक टोपली अने झाड़ू हतुं सफाई करवा माटे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। सड़क पर झाड़ू लगावे छे, सफाई करे छे, कचरो भेगो करे छे। इकट्ठा करना आने जमा करना, बधो कचरो भेगो करी ले छे। नालियों की सफाई की। नाळीनी अंदर एटले के गटरनी अंदर जे कचरो फसायेलो हतो अने गंदा पाणीनो निकाल थतो न हतो अने एना लीधे कचरो गंदा पाणीनी अंदर खराब थई गयेलो, कोहवाई गयेलो हतो अने एनी गंध चारे बाजू फैलायेली हती अने एना लीधे वधारे गंदकी फैलायेली हती। तो ए नाळीनी सफाई काम पण अध्यापक साथे विद्यार्थीओ करे छे अने नाळीनी सफाई કરી લે છે અને પાણીને જવા માટેનો રસ્તો બનાવી દે છે। આગળ नाली की सफाई करने के बाद उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवाइयाँ डाली। मक्खी ज्यां वधारे प्रमाणमां माखी फैलाय, कीड़ी थाय, मच्छर थाय तो एना उपर मच्छर मारवानी अने अनेक प्रकारना जीवजंतुओने जेने जे नुकसान पहोंचाडता होय एने मारी नाखवानी के वधारे फैलावो न थाय ए माटेनी दवा गवर्नमेंट तरफथी पण छंटकाव करवामां आवे छे। तो ए लोकोए नाळीनी सफाई करी, गटरनी सफाई करी अने एना उपर माखी अने मच्छर मारवानी दवा पण छांटी दे छे। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा अने कूंडानी उपर मतलब कचरा पेटी उपर एनुं ढांकण पण बंद करी दीधुं। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकले। मोहल्लामां जेटला लोको रहता हता ए बधा आ अध्यापक अने विद्यार्थीओने जोवा माटे बहार आवी जाय छे और उन्हें देखने लगे अने ए लोकोने जोवा लागे छे। बच्चों में बहुत उत्साह था। आ बाळकोनी अंदर खूब उत्साह हतो। उमंगथी काम करी रह्या हता। सफाई करवुं एमने गमतुं हतुं।
देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। જોતજોતામાં આખો મોહલ્લાની સફાઈ થઈ ગઈ। અધ્યાપકને લોકો को સમજાયા। અધ્યાપકે જે શેરીના લોકો જોવા માટે આવેલા હતા એમને અધ્યાપક સમજાવે છે કે वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। घरનો કચરો બધાએ કચરાપેટીમાં જ નાખવો જોઈએ। वे घर के आसपास सफाई रखे અને ઘરની આસપાસ સફાઈ રાખવી જોઈએ क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। અને જેનાથી ગંદકી ફેલાય છે તો એ વસ્તુ આપણે સાફ રાખવી જોઈએ કે સફાઈ રાખવાથી ગંદકી ફેલાતી નથી અને આપણને અનેક પ્રકારના રોગમાંથી મુક્તિ મળી જાય છે। उन्होंने कहा मेरी पाठशाला में के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। અમારી શાળાના છોકરાઓ અઠવાડિયાની અંદર સપ્તાહ યાને 7 દિવસનો સમૂહ। 7 દિવસ એટલે સપ્તાહ। एक दिन सप्ताह में एक दिन आया करेंगे। एक अठवाडियाમાં एक दिवस आ શેરીમાં આવશે और वे मोहल्ले को साफ करेंगे અને એ લોકો આવશે અને આ તમારા મોહલ્લાની સફાઈ કરશે। आप भी इस काम में उनकी सहायता करें। તમે પણ એને આ કામની અંદર મદદ કરજો। કેવું લાગે આપણને કોઈ કહે કે આ તમારી સફાઈ કરવાની છે, આપણું કામ બીજા કરતા હોય, આપણે ગંદકી કરીએ અને એ લોકો સફાઈ કરે, આપણે જોઈએ છે, સારું લાગે ના? તો આપણે આપણું ગામ, શેરી, શહેર, જો આપણે પહેલાં એ સુધર્યું, ઘરમાં સ્વચ્છતા રાખીશું, શેરીની સફાઈ કરીશું તો આપણું શહેર, આજે આપણું સુરત શહેર, ગુજરાત રાજ્યની અંદર આવેલું સુરત શહેર એ સ્વચ્છતાની બાબતમાં પ્રથમ ક્રમે છે। તો આપણે એ વસ્તુનો ગર્વ અનુભવવો જોઈએ કે સુરત શહેર આજે સ્વચ્છતાની બાબતમાં આટલું બધું આગળ છે, તો આપણે કેમ આપણું ઘર, શેરી, શહેર, ગામ કેમ આપણે સફાઈ નહીં રાખીએ? સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા, આપણે એ પણ કરવું જોઈએ। उन्होंने कहा एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा एक व्यक्ति मोहल्लाમાંથી આગળ આવે છે અને કહે છે नहीं नहीं इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। આ બાળકોએ આવવાની કોઈ જરૂર નથી। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें। આપણે બધા મળીને અમારું કામ આ સ્વચ્છતાનું અમે જાતે આ કામ કરી લેશું, અમે સ્વચ્છતા રાખીશું। आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाओगे અને હવે પછી તમે અમારી શેરી મોહલ્લો સાફ સ્વચ્છ જોઈ શકશો। તો આ પાઠ કેવો? સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુત્વ, स्वच्छता स्वच्छ रखे और स्वस्थ रहे। तो हम भी स्वच्छ गांव, शहरी, शहर, मोहल्ला सब स्वच्छ रखना चाहिए। आप अपनी पाठशाला में जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? तो अपने स्कूल में गए तो कमरा, कार्यालय, कुर्सी, मेज, फलक, शैक्षणिक साधन, मैदान, बाग, बगीचा, ये सब की सफाई हम करते हैं। और आपके गांव, मोहल्ले के आसपास में कोई स्कूल है तो स्कूल की समस्या तो कुछ तो होगी, कुछ न कुछ गांव की, मोहल्ले की और कोई समस्या होगी तो उसे पता कीजिए और पता करके उनका हो सके इतना हम मदद करें, साफ सुथरा रखने के लिए कुछ मदद कर सके। तो ये समस्या क्या है? पहले तो ये समस्या हमें ढूंढनी चाहिए कि वह समस्या क्या है, वह समस्या क्यों है। तो लोग कहेंगे कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, इसलिए ये समस्या है। और दूसरी समस्या क्या है कि लोग कूड़ेदान में नहीं डालते और उसके आसपास ही डाल देते हैं और आसपास गंदगी फैली होती है। तो उचित जगह पर कूड़ा नहीं डालने की वजह से गंदगी फैलती है। वह समस्या हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? तो हम ये समस्या इस तरह दूर कर सकते हैं कि कूड़ा योग्य स्थान पर ही रखें, कूड़ेदान में ही डालें। कूड़ा डालने के लिए, स्वच्छता के लिए
अपनी सूचना स्थान पर सूचना लिखी जाए कि कूड़ा कूड़ेदान में रखे, स्वच्छता रखे। उचित जगह पर कूड़ा रखे जाने की हमारी जिम्मेदारी, कूड़ा कूड़ेदान में डालने की भी जिम्मेदारी हमारी है। गंदगी की समस्या को दूर करने में और हमारे साथी इस प्रकार योगदान दे सकते हैं, हमारे साथी भी इस तरह योगदान दे सकते हैं। हम भी इस तरह कूड़ा कूड़ेदान में डालकर स्वच्छ जगत का निर्माण कर सकते हैं और सफाई सप्ताह भी मना सकते हैं। सफाई सप्ताह इस पार्ट में आए ना कि सप्ताह में एक दिन हमारे लड़के आएंगे और सफाई करेंगे, तो सफाई सप्ताह भी हम रख सकते हैं। लोग खुद सफाई करके हम अपना गांव, शहरी मोहल्ला साफ सुथरा देख सकते हैं। उचित जगह पर कूड़ा डालकर हमारी फर्ज समझनी चाहिए। कूड़ादान भर जाए तो उनके तुरंत उनका दूसरी जगह निकाल करना चाहिए। इस तरह हम स्वच्छ जगह का स्वस्थ रखें और स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रखें। इस तरह हम स्वच्छ जगत का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह ये स्वच्छता का पाठ हम दिन की शुरुआत होती है तब से स्वच्छता रखें और स्वस्थ रहे।